Today is the big day to think of how far flung we have come and how far we have to go. Along with multifarious struggles and triumphs, there is much more to thrive and much more to show. Let's rejoice the majestic journey. Greetings to one and all. I, Sharon, feel extremely privileged to have this opportunity to address you about our annual report of Mount Olive Mission School. Due to COVID-19, we cannot arrange program offline, so we have conducted it online. Now I invite Mrs. Sharbila ma'am to give a welcome speech. Good morning, respected Director Dr. Sam Abraham, Principal Mr. Bonnie John Matthew, teaching and non-teaching staff, parents, dear students, and all the viewers who are watching us online. It is my pleasure to welcome you all on this memorable occasion. Today we are going to celebrate third annual function Ebenezer of Mount Olive Mission School. Ebenezer means प्रभु ने अब तक हमारी सहायता की या फिर अब तक हमें संभाल कर रखा. First of all, I would like to warmly welcome Director Sir Dr. Sam Abraham, who is the founder of our school and always help us in achieving the heights. I would also like to welcome our Principal Sir Mr. Bonnie John Matthew, who is a great guidance for our school. It was only with your guidance that we were able to complete our academic year 2020-21. Now I would welcome all parents who continuously support us and believe in us. Really, we couldn't even imagine this academic year without your support. Let me welcome our teachers who took constant effort for the development and learning of the students. I also welcome our dear students who make this event remarkable one. Today is an important day for parents to cheer their little ones. It is the day of victory, medals, smiling faces and cameras. So dear students, enjoy your victory. With all enthusiasm, I would welcome you all once again on the behalf of Mount Olive Mission School. Thank you all. Thank you, ma'am. Now it's time to award our brilliant students and also mark the progress and success of our school. May I invite Mrs. Anjana ma'am to announce the name of academic prize winners. Thank you, Sharon ma'am. Good morning everyone. I hope everyone is doing well. Today I Anjana here to present you a very important section of today's program, that is declaration of academic result for the session 2020-21. Parents, as you all know that the academic result is very important section of today's program. Here, students shown the marvelous talent in whole year, even in the midst of COVID time. All the students work hard for their achievement. This time, we are delighted to announce the names of students, those who secured first and second position in their respective classes. So now, I will be reading out the names of students, those who secured position in their classes. First of all, I will start from LKG class. From LKG class, first position goes to Master Naman. He has got 98.3% with A+ grade. Master Naman, 98.3% with A+ grade. Second position goes to Miss Priyanshi. Second position goes to Miss Priyanshi. She has got 98% with A+ grade. 98% with A+ grade. I congratulate both of them
on behalf of Mount Olive Mission School staff. Now I am reading the names from UKG class. First position goes to Virat Thakur. Master Virat Thakur. He has got 99.2% with A+ grade. Virat Thakur has got 99.2% with A+ grade. Second position got by Shivansh Thakur. Shivansh Thakur, he has got 98.8% with A+ grade. Shivansh Thakur has got 98.8% with A+ grade. I congratulate both of them on behalf of Mount Olive Mission School staff. Now I am reading the names of winners from class first. From class first position goes to Paridhi, daughter of Mr. Rakesh Kumar. Paridhi, daughter of Mr. Rakesh Kumar. She has got 99.4% with A+ grade. 99.4% with A+ grade. Second position goes to Swastik. Swastik, son of Mr. Deepak Kumar. He has got 98.8% with A+ grade. Mr. Swastik has got 98.8% with A+ grade. I congratulate both of them on behalf of Mount Olive Mission School. Now I am reading the names of winners from class second. From class second, first position goes to Divyanshi. Miss Divyanshi, she has got 99.2% with A+ grade. Divyanshi has got 99.2% with A+ grade. Now, second position goes to two students. Name of first student is Arnav Thakur. Arnav Thakur has got 98.8% with A+ grade. And Yashvi Thakur also got 98.8% with A+ grade. I congratulate the winners from second class on behalf of Mount Olive Mission School staff. Now I am reading the name of students who secured position in class third. From class third, first position got by Shivanshu. Mr. Shivanshu, he has got 95.4% with A+ grade. Mr. Shivanshu, 95.4% with A+ grade. Second prize goes to Khushbu. Miss Khushbu, she has got 95.2% with A+ grade. Miss Khushbu has got 95.2% with A+ grade. I congratulate the winners of class third on behalf of Mount Olive Mission School. Thank you all parents for standing with this institution during this COVID-19 time. I assure you of our fullest cooperation and our commitment to serve the children continuously in the near future. Thank you once again. Thank you Anjana ma'am, and congratulations to all the prize holders. Winning means you are doing better than you have ever done before. Not only teaching and study, but we also conducted various activities during this session. The result of various activity during the course will be announced by Mrs. Ranjana ma'am. Thank you Sharon ma'am. Respected principal sir, teachers, parents and my dear students, a very warm and pleasant good morning to you all. Everyone is a star and deserve the right to twinkle.
Prize distribution is a memorable, proud, special and most awaited event for every institution as well as every student. It gives a sense of happiness and a sense of responsibility for fulfilling new commitments with dedication. A student loyalty, dedication and determination made him winner in every field, and awards recognize the students' ability and efforts and lift their self-confidence. Now, I am going to announce the name of the students who received awards in the co-curricular activities for the session 2020-21. First of all, I would like to call out the names of LKG award winners. So, first activity we conducted was poem competition. So, first is Revant, second is Naksh, and third is Priyanshi. Now next activity is English calligraphy competition. So first position is Divyanshi and Revant. Second is Naman and third is Tanish. Next activity is Hindi calligraphy competition. First is Priyanshi and Divanshi. Second is Tejas and Revant. Third is Naman. Next activity is thumb painting competition. First position is secured by Tejas. Second position is secured by Tanish. And third position is secured by Naksh. Next is art and craft competition. First position is secured by Divyanshi. Second position is secured by Tejas. And third position is secured by Revant Thakur. Next is dance competition. First position is secured by Ridisha. Second position is secured by Tejas. And third position is secured by Divanshi and Naksh. Now next is UKG class. First activity is poem competition. First position is secured by Virat Thakur. Second position is secured by China. And third position is secured by Bhanvi and Yashvi. Next is English calligraphy competition. First position is secured by Kritika and Kritika Thakur. Second position is secured by Avni and Ananya. Third position is secured by Pratyaksh, Virat and China. Next is art and craft competition. First position is secured by Niharika. Second position is secured by China. And third position is secured by Kritika. Next is dance competition. First position is secured by Aradhya Ram. Second position is secured by Kritika Thakur, Kritika and Niharika. Third position is secured by Avni, Agam and Riya. Next turn is class first. First is singing competition. First position is secured by Pridhi. Second position is secured by Pridhi Kapoor and Roshni. Third position is secured by Suryansh and Manvi. Next activity is English calligraphy. First position is secured by Pridhi and Roshni. Second position is secured by Par and Anvi. Third position is secured by Alisha and Suryansh. Next activity is Hindi calligraphy. First position is secured by Anvi, Pridhi and Roshni. Second position is secured by Aditi, Pridhi Kapoor. Third position is secured by Priya and Par. Next is card making competition. First position is secured by Roshni. Second position is secured by Pridhi. And third position is secured by Priya and Alisha. Next is art and craft competition.
First position is secured by Roshni and Anvi. Second position is secured by Swastik and Pridhi. Third position is secured by Arnav and Suryansh. Next is dance competition. First position is secured by Roshni and Aditi. Second position is secured by Pridhi. Third position is secured by Parv and Rudra. So next is class 2nd English calligraphy competition. First position is secured by Shanvi. Second position is secured by Akshit. And third position is secured by Atharv and Anvi. Next is Hindi calligraphy competition. First position is secured by Arnav and Akshit Thakur. Second position is secured by Yashvi and Pankhudi. Third position is secured by Mannat and Kritika. Next is card making competition. First position is secured by Yashvi Thakur and Divyanshi. Second position is secured by Atharv. Third position is secured by Arnav Thakur. Next, art and craft competition. First position is secured by Anshvyas. Second position is secured by Vanshika. And third position is secured by Neha Thakur. Next is dance competition. First position is secured by Neha. Second position is secured by Yashvi. And third position is secured by Shanvi and Kritika. Next is class 3rd singing competition. First position is secured by Khushbu. Second position is secured by Tanmay. Third position is secured by Swarnika. Next is English calligraphy. First position is secured by Rishvik and Tanushka. Second position is secured by Khushbu. And third position is secured by Arnav. Next activity is Hindi calligraphy. First position is secured by Khushbu. Second position is secured by Arnav Patyal. And third position is secured by Swarnika. Next is card making. First position is secured by Aditya Rana. Second position is secured by Khushbu. And third position is secured by Shivanshu. Next is art and craft activity. First position is secured by Shivanshu. And second position is secured by Khushbu. And third position is secured by Akshit. Next is dance competition. First position is secured by Tanushka. Second position is secured by Khushbu and Arnav. And third position is secured by Akshit Kapoor. So thank you students for your participation. Thank you one and all. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्टेफी सनी आज आपके सामने एनुअल स्कूल रिपोर्ट पेश करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 महामारी की वजह से देश के सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे, जिसके चलते हुए अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का काफी मुश्किल समय रहा। बाकी स्कूलों की तरह माउंट ओलिव मिशन स्कूल ने भी अपना साथ नहीं छोड़ा और ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा बच्चों तक अपने विचारों का आदान प्रदान किया। इस साल हमारे स्कूल में 10 अगस्त 2020 को टीचर्स मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे न्यू ऑनलाइन सिलेबस, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यूट्यूब चैनल जैसे ऐप्स के बारे में डिस्कस किया। इस वर्ष हमने यूट्यूब चैनल माउंट ओलिव मिशन स्कूल मॉम्स भी बनाया, जिसकी हेल्प से बच्चों को पढ़ाया गया। इस वर्ष प्रत्येक क्लासेस के लिए ऑनलाइन स्टडीज के रिगार्डिंग व्हाट्सएप क्लास ग्रुप बनाए गए, जिसके माध्यम से बच्चों और अध्यापकों के बीच काफी अच्छा इंटरेक्शन रहा। इस वर्ष हमारे स्कूल में नए प्रिंसिपल सर की नियुक्ति हुई, जिनका नाम है
बॉनी जॉन मैथ्यू। साथ साथ नए न्यू टीचर्स का भी अपॉइंटमेंट हुआ, जिनका नाम है मिसेस अंजना कपूर एंड मिस शैरन पॉल। कोविड-19 महामारी के चलते हमने एग्जामिनेशन शेड्यूल भी चेंज किया। इस वर्ष हमने ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट किए, जिसमें ओरल एग्जामिनेशन थ्रू वीडियो कॉलिंग एंड रिटन एग्जाम पीडीएफ के थ्रू हमने आयोजन किया और ये स्कूल के लिए एक अच्छा और नया अनुभव रहा। हमारे विद्यालय में 4th क्लास का भी आरंभ हो चुका है। अब हमारे विद्यालय में क्लासेस LKG से लेकर 4th क्लासेस तक है। तो ये थी हमारी इस वर्ष की एनुअल स्कूल रिपोर्ट, जिसमें माउंट ओलिव मिशन स्कूल की 2020 और 21 के बारे में हमने जाना। धन्यवाद। Now I will invite Reverend Bonnie John Matthew to come and enlighten us with his golden words. आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम बोनी जॉन मैथ्यू है और मैं माउंट ओलिव मिशन स्कूल का वर्तमान प्रिंसिपल हूँ। ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैं ऑनलाइन के माध्यम से आप सबसे बात कर पा रहा हूँ। आज रिज़ल्ट का दिन है और हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि ये दिन हमें इस बात की अनुभूति दिलाता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ में नहीं है, क्योंकि हम अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को बढ़ते हुए देख रहे हैं। सभी अभिभावकों को, बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये आपके कठिन परिश्रम और सहयोग से ही माउंट ओलिव मिशन स्कूल का ये वार्षिक रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। इस समय मैं साथ ही साथ हमारे सभी टीचर्स का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम में से किसी ने सोचा नहीं था कि हम पर भी पाबंदी आएगी, हम सबों को कमरों में बंद रहना पड़ेगा, लेकिन कोविड-19 के कारण हम जानते हैं हमारे ज़िला पूरे में सब ऑफिस बंद कर दिए गए थे, सब ट्रांसपोर्टेशंस में पाबंदी थी और ऐसे समय में छोटे बच्चों को एजुकेट करना एक बहुत ही चुनौती भरी बात थी। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ सभी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बड़े कर्तव्य निष्ठा के साथ किया है। हम में से कईयों को पता भी नहीं होगा कि हमारे टीचर्स ने इसके पीछे कितनी मेहनत की है। वे समय समय में स्कूल में आते थे, लेसन प्लान्स बनाते थे, खुद ही वीडियोस कैप्चर करते थे, खुद ही उसकी एडिटिंग करके यूट्यूब पे अपलोड करते थे और आपके जो होमवर्क आप जो भेजते थे उन सबों को टाइम टू टाइम चेक कर कर आपको रिप्लाई देते थे। सुनने में शायद ये बिल्कुल आसान लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही कठिन बात है। लेकिन इस समय हम सब टीचर्स के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बड़े कर्तव्य निष्ठा के साथ किया है। इस कोविड-19 के संदर्भ में भी माउंट ओलिव स्कूल के सभी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का यही कोशिश रहा है कि हमारे पास जितने उपलब्ध माध्यम हैं उसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर हमारे बच्चों को हम अच्छी रीति से एजुकेट कर सकें। इस समय में मैं कुछ सूचनाएं भी आपके बीच में रखना चाहता हूं। हमारा स्कूल माउंट ओलिव मिशन स्कूल जो है वो HP बोर्ड से एफिलिएटेड है और इस साल हम क्लासेस को हमने एक्सटेंड किया है। हमने क्लास 4th तक हमने क्लासेस को एक्सटेंड किया है। अब LKG से लेकर क्लास 4th तक के लिए एडमिशन्स ओपन है। इसलिए यदि कोई अपने बच्चे की एडमिशन्स कराना चाहता है, यदि आपके जानकार में आपके रिलेटिव्स या आपके दोस्त या आपके पड़ोसी जन जो एडमिशन कराना चाहते हैं, उनको आप सूचना दे सकते हैं कि एडमिशन्स ओपन है और वो जल्दी से जल्दी आकर अपने बच्चों की एडमिशन करा लें। हमारा अगला एकेडमिक ईयर 5 अप्रैल से हम शुरू करेंगे, इसलिए सभी पेरेंट्स से, बच्चों से निवेदन है कि वो फीस भरें और किताबें ले लें, ताकि हम 5 अप्रैल से ही अपनी क्लासेस को शुरुआत कर सकें। एक और बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाइबल में इस प्रकार से एक कथन है, बच्चे ईश्वर के द्वारा दिए गए गिफ्ट हैं। माउंट ओलिव मिशन स्कूल के हर एक टीचिंग
नॉन टीचिंग स्टाफ्स बच्चों को ईश्वर के द्वारा दिए गए गिफ्ट के रीति से देखते हैं और हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी रीति से इमोशनली, सोशली, इंटेलेक्चुअली उन्हें हम एजुकेट करें ताकि वो कल हमारे देश का एक अच्छे नागरिक बन सके। आपका इसी तरह का सहयोग और प्रोत्साहन की कामना हम अगले दिनों में भी करते हैं। आप सबों को धन्यवाद कि आप सबने हमारा सहयोग दिया। ईश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Good morning to one and all. It is a matter of pride for me to propose a vote of thanks on behalf of my entire school colleagues. First of all, sincere thanks to the God. सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमपिता परमेश्वर का जिन्होंने हम सबको इस कोविड-19 महामारी के दौर में भी सुरक्षित और स्वस्थ रखा। Then I would like to thank our director Dr. Sam Abraham जिन्होंने हमें सपोर्ट और इनकरेज किया। I would like to thank our principal sir Bonnie John Matthew, staff members, teaching staff and non-teaching staff also, because it is through their hard work and dedication we completed our session 2020. Now, I would like to thank Robin sir who help us to use new technology and help students also. Lastly, I would like to thank our beloved students and their parents who through their dedication made it as a grand success. अब मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने डियर पेरेंट्स का एंड डियर स्टूडेंट्स का जिन्होंने कोविड-19 के कारण चलने वाली ऑनलाइन क्लासेस में अपना पूरा सहयोग हमें प्रदान किया। मैं बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता का भी एंटायर स्टाफ की तरफ से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बच्चे की प्रत्येक एक्टिविटी में उनका पूरा सहयोग दिया। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ऐसे ही अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। डियर पेरेंट्स, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि इस वर्ष से हमारे स्कूल में क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 4 तक एडमिशन होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने रिश्तेदारों को भी ये संदेश पहुंचा दें ताकि वे भी अपने बच्चों की एडमिशन्स करवा सकें। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में बुक्स भी आ चुकी हैं, तो आप एडमिशन के साथ साथ अपनी बुक्स भी स्कूल से कलेक्ट कर लें क्योंकि 5 अप्रैल से हमारा न्यू सेशन रेगुलरली स्टार्ट होने वाला है। 5 अप्रैल से हमारी क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगी। सो थैंक यू डियर पेरेंट्स।